वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड थी। इसमें मैंने आपको एक एक लाइन के बारे में बताया था, एक एक फ्रेज के बारे में हमने बात की थी। आज इस क्लास में हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन में जो फ्रेजेस होंगे वो इकट्ठे बोले जाएंगे। तो डिक्टेशन शुरू की जा रही है। आई एम वेरी ग्लैड to inform you that our business has turned out very satisfactorily indeed during the past year. Full stop. Notwithstanding that much has militated against our progress. Full stop. Before dealing with the figures in the account, I think it is necessary for me to recall to your minds what I said at our last meeting. Full stop. You will probably remember these words. On this occasion, we have to meet an adverse balance, and it is deemed necessary to take immediate steps to improve our position. Full stop. At the beginning of the year, we brought forward a substantial amount, and now we are faced with a deficit. Full stop. I agree that we could not perform better in the peculiar circumstances which were in operation during the last year. Full stop. Those who were present at the meeting remember the statement on this matter in the report. Full stop. It was felt that by some means we must regain our position, and therefore every circumstances was considered which may affect the profitable working of the company, and the result reflects great credit on all those who are concerned in the reorganization, and I think that you are satisfied in this respect. Full stop. तो ये थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन। इसकी आपने 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। आपने एक एक फ्रेज को चेक करना है, एक एक लाइन को चेक करना है कि आपकी कहां मिस्टेक हो रही है, तभी आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।